वार्ता। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। कुछ ही समय में हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Domestic indices have witnessed marginal losses. Sensex closes below 55,800 points. Nifty settles below 16,600 level. Rupee depreciates to 77 rupees and 63 paise against the US dollar, and Brent crude oil prices decline to hover around $117 a barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 55,800 से नीचे और निफ्टी गिरावट से 16,600 से नीचे फिसला। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर $77.63 के स्तर पर दर्ज हुआ और कच्चे तेल के वायदा भाव गिरावट से $117 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। वैश्विक बाजारों के संकेतों से घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज मामूली गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.1% के बदलाव से 49 अंक गिरकर 55,769 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% के नुकसान से 43 अंक गिरकर 16,584 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.5% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.2% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today logged marginal losses amid mixed cues from the global share markets. Sensex at the BSE closed below 55,800 points, while Nifty at the NSE ended below 16,600 level. Sensex lost 49 points, 0.09% to end at 55,769, while Nifty slipped 43 points, 0.26% to 16,584. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 1.45% and the small-cap index ended 1.16% down. In the Sensex pack, 12 companies logged gains while 18 declined. Reliance was the top gainer as it rose 2%, followed by Infosys gained 0.9%. Larsen & Toubro surged 0.8% and Sun Pharma ended 0.6% up. On the other hand, Ultratech fell 5.5%, Maruti slipped 2.7%, NTPC plunged 2.5% and Axis Bank declined 2.2%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of the 19 sectors logged losses. Energy and IT, both indices gained the most as it added 0.3% each. Tech index rose 0.2%. On the other side, power sector fell 2.4%, while basic materials ended 2.3% down and utilities slipped 2.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,308 companies gained while 2,029 fell. Shares of 129 companies remain unchanged. नजर डाल लेते हैं रुपये बाजार में। अंतरबैंक मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की मामूली गिरावट से $77.63 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। इस बीच डॉलर इंडेक्स 0.1% की बढ़त से 101.9 के स्तर पर दर्ज हुआ। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पुनीत, किस तरह से आंकते हैं बाजार की दिशा? काफी उथल पुथल भरी रही, लेकिन अंत में बाजार बंद होने के समय एक तरीके से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बाजार अपने जो तेजी के जो दौर था, जो उत्साह था, उससे पिछड़ता हुआ सा नजर आया। खासतौर पे बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी कि या तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल जो भारत का मौसम का असर है वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है और बाजार को सुस्त बना रहा है। लेकिन क्या आर्थिक जगत से ऐसी खबरें हैं कि बाजार में अभी इसी तरीके का माहौल रहेगा या कुछ सुधार की उम्मीद नजर आती है? तो अमित, आपने सही कहा कि बाजार का जो
उसमें काफी उथल पुथल है बाजार के माहौल में, और हमने देखा कि पिछले 6-7 सप्ताह बहुत भारी गिरावट थी स्टॉक मार्केट्स में, और उसके बाद करीब पिछले 2 सप्ताह से एक रिवाइवल शुरू हुआ। इस वीक की बिगनिंग में भी हमने देखा मार्केट्स में तेजी थी, और आज भी शुरुआती दौर में तेजी थी। लेकिन ये बात हमने देखी कि जब बाजार ऊपर आया तो वहां पर दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, थोड़ी सेलिंग भी हुई, और मार्केट में वापस गिरावट देखी। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि एक मिला जुला सा ये सप्ताह रहा, और मुझे लगता है मूड भी मार्केट का मिक्स्ड ही है। कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं, और मार्केट अभी डिसाइड जिसे कहते हैं हम नहीं कर पाती कि वो उसको कोई एक तरफा तेजी या मंदी अभी वो निष्कर्ष नहीं निकलता। मेरा अपना अनुमान यह है कि आने वाले 2-3 महीने बाजार शायद लेगा कि जब तक इकोनॉमिक ट्रेंड क्लियर हो, और कैसी खबर आ रही है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर खास तौर से, और उसी से तय होगा कि आने वाले बाजार की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो मुझे लगता है अभी ये ऐसा एक उतार चढ़ाव का टाइम रहेगा, जहां पर नीचे जाएगा तो वैल्यू बाइंग होगी, बाजार ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और एक ट्रेडिंग रेंज में मार्केट के रहने की उम्मीद है। Puneet, you've seen stock-specific action, especially with those stocks which have weightage on the Sensex and Nifty, like Reliance Industries and Infosys Technologies. So, what's your take on the DII buying tactics right now in the markets? Because they are the net buyers, the FIIs are the net sellers. They're targeting the top Sensex tops as a part of their portfolio specifically. So clearly, very interesting trends are emerging as far as FIIs and DIIs are concerned. But before that, I'd like to comment on the first part of your question, which was relating to large caps like Reliance, where we have seen a very large rally in last 2-3 weeks. The stock has gone up by 14-15% in last couple of weeks. And in fact, Mr. Ambani once again became the richest man in Asia based on the valuation of his stocks. So clearly, that kind of a story is unfolding in this market, where there's a race between certain individuals to be the number one in the market. That aside, that is just on a lighter note. I think the key thing which is happening in the markets is that FII selling is kind of slowing down. Earlier, we were seeing FIIs sell to the tune of 4,000 crore to 5,000 crore per day. That selling is now down to roughly about 1,000 crores per day, and which is very well matched by DIIs, domestic funds, which continue to see inflows from mutual fund investors. And also, if you look at the aggregate investments of domestic mutual funds and institutions, for the first time in last 15-20 years that we have been watching the markets, for the first time the mutual fund holdings in domestic companies has actually exceeded that of FII now. So clearly, I think that balance of power is kind of changing, but it will take some time to manifest in the market. But I think overall, FIIs are beginning to slow down their sales, and domestic institutions continue to buy. So I think that's good news for the market. If you look at the IPO market today, Aether Industries opened on listing day, and they hit the upper circuit when it went up by 20%. How would you look at the strategy of companies looking to raise funds from the public in this bearish trends that we are seeing right now? Volatile market, one day the market goes up, the other day the market falls. On the other hand, if you look at Vedanta, they are looking to raise more than 4,000 crore rupees by the issue of debentures. How are companies thinking in terms of raising funds from the market and getting the best premium price, while at the same time the investor also gets a premium on their investment as a stag investor? So the IPO market is going through a very interesting phase. There is definitely a slowdown in the number of companies which are coming to the market. We have seen a huge spurt by so-called platform companies. The internet companies which they came and raised a lot of money from the markets. That has slowed down, but we still have companies which have good business models and which are doing well. Those companies are still coming to the market, raising capital. But definitely that amount of money being raised has slowed down a lot. And my own sense is that we're not going to see a big spurt of activity in IPO market. However, the good performance of some companies in the IPO market is a positive sign. It shows that retail money is still chasing good stocks. They expect to make money by investing in new companies. I think that is positive for the markets. But if you really ask me,
the money, the ability of companies to raise money from this market is substantially lower now. We were earlier seeing big capital raise in terms of NCDs, in terms of equity capital earlier. That has gone down by 60-70% in this bear market, and I don't think it is going to go up in a hurry, at least in the short term. पुनीत, आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि अर्थव्यवस्था में या उद्योग जगत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसी में कुछ चीजें और भी मैं जोड़ना चाहूंगा। किस तरह से एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनको आंकते हैं? अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें, ब्याज दरों की बात करें, लेकिन अगर कहीं ये चुनौतियां हैं तो साथ ही साथ कहीं न कहीं जो कच्चे माल की कीमतें थी उनमें भी जो बहुत तेजी आई थी, वहां कहीं न कहीं सुधार या नरमी आती हुई नजर आ रही है। खासतौर पे मेटल क्षेत्र में भी कीमतों में थोड़ा ही सही लेकिन गिरावट आई है। लेकिन जो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैं, उसमें ऐसी आशंकाएं हैं कि उसका जो सरकार का जो राजस्व है कहीं न कहीं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा। एक विशेषज्ञ के तौर पे इन सारी चीजों को किस तरह से क्या आंकते हैं और ये कितनी बड़ी चुनौतियां साबित हो सकती हैं अर्थव्यवस्था के लिए? तो अमित, आपने जैसे कहा और मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया था कि एक मिक्स्ड बैग है इकोनॉमिक न्यूज इस वक्त। कुछ चीजें अच्छी भी चल रही है और कुछ चीजें कंसर्न वाली हैं। जो कंसर्न है, जो मेन कंसर्न है, वो आप जानते हैं इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं और इनके चलते जो इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन आने की आशंका है कि डिमांड में स्लो डाउन आ रहा है, वो एक बड़ी चिंता है। तो ये चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के लिए। डेफिनेटली कुछ अच्छी खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि इन्फ्लेशन जिस प्रकार से बढ़ रहा था, और ये एनेक्डोटल एविडेंस, अभी डेटा नहीं आया है, लेकिन आप और हम जानते हैं बाजार की जो ट्रेंड्स हैं उससे कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन थोड़ी कमी आनी शुरू हुई है। फूड इन्फ्लेशन में भी कमी आ रही है, मेटल्स में कमी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीनों में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो कम आना शुरू हो जाएगा। तो आरबीआई के ऊपर दबाव भी पड़ना कम होगा कि वो ज्यादा तेजी से रेट बढ़ाएं। साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ की यदि हम बात करें तो जो डेटा हमारे सामने आ रहा है वो दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में कोलैप्स नहीं कर रही है। करीब करीब 8% इकोनॉमिक ग्रोथ की उम्मीद है हमें, और ये दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमीज है तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। चाइना की यदि बात करें तो अनुमान है कि इस वर्ष वो शायद 3.5% से 4% शायद ग्रो कर पाएंगे। तो क्लियरली भारत जो है वो काफी आगे है चाइना से इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये अच्छी खबर है, पर मुझे लगता है कि बाजार में ये जब इस प्रकार का जब मिक्स्ड एक ट्रेंड होता है, कुछ अच्छी खबर और कुछ बुरी खबर का, तो उसमें बाजार में वॉलेटिलिटी रहती है। क्योंकि कभी हम देखेंगे कि बाजार में तेजी आती है, फिर अचानक सेलिंग आती है। तो और ये माहौल अभी 2-3 महीने, जैसे मैंने पहले कहा था, ये मुझे लगता है कि रहेगा, और शायद सितंबर के बाद कि अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। पर कुल मिलाकर मैं ये मानता हूँ कि इन्फ्लेशन रेट विल कम डाउन, आरबीआई विल स्लो डाउन इट्स इंटरेस्ट रेट हाइक्स। तो सितंबर के बाद मेरी उम्मीद है कि इकोनॉमिक कंडीशंस विल बी मच बेटर देन एट प्रेजेंट। मतलब मोटे तौर पे ये माना जाए कि हमको कहीं न कहीं 1 तिमाही और इंतजार करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था जो है उसके सामने की जो चुनौतियां हैं वो सेटल डाउन होना शुरू करें। लेकिन साथ ही साथ अगर इस समय इसका आकलन मांगा जाए कि जो शेयर बाजार की दिशा है वो कितना रेंज बाउंड नजर आता है, अगर उसका निचला स्तर कहां तक हम देख सकते हैं कि बाजार में जो एक बात कही जाती थी कि या तो स्पेकुलेशन होता है या बाजार का एक मूड होता है जो स्विंग नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में कहीं वो निराशा की भावना कितना बाजार को गिरा सकती है या कितना और ऊंचा उठा सकती है अगर उत्साह आ जाता है तो अमित, अगर हम देखते हैं जो रीसेंट ट्रेंड्स रहे हैं और जो पीछे रिबाउंड आया वो करीब 15,600 निफ्टी के लेवल से हमने देखा, और करीब करीब 1,000 पॉइंट निफ्टी का वहां पर उछाल आया। तो हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 2-3 महीनों में जो बॉटम बन सकता है बाजारों का वो 15,000 के आसपास निफ्टी का बन सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि 50,000 का आंकड़ा बीएसई सेंसेक्स का नहीं टूटना चाहिए, चाहे कुछ डिफिकल्टीज आए। और ऊपर में हमें लगता है कि अभी बाजार में स्कोप है। डेफिनेटली मार्केट जो है वो 15,000 और 17,000 का जो आंकड़ा है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ हम समझते हैं कि इसके बीच में ट्रेडिंग रेंज में मार्केट रह सकती है। So Puneet, looking at the stock indices, NSE and BSE, you just informed our listeners that what is the downside for the market in terms of points. So 50,000 would be benchmark for the markets not to go beyond, even though it's trading at 55 right now. But if you convert that language into net buying and selling, according to the data, FIIs in this financial year have
already pulled out $9 billion worth of investment into the equity market. And on the other hand, DIIs have been net buyers to the tune of $11 billion. So they have obviously exceeded the net buying and net selling of FIIs by $2 billion. How do you see the DIIs continuing this trend of being the net buyers in the market? So DIIs, like I said earlier, have for the first time started exceeding FII investments in markets, largely on the basis of very good domestic inflows. Roughly, if you look at a systematic investment plan, SIPs, 1 year back the flows used to be about 7,000 crore to 8,000 rupees a month. Right now they are about 12,000 crores a month. So which is a very healthy increase, and that money has continued to flow into the market despite the recent fall. Therefore, my own sense is that going forward, we'll see these numbers rise further as sentiment becomes positive. So clearly, I think the trend of DIIs absorbing this huge selling by FIIs, that will continue. And my own guess is, in fact, I'm just guessing here, but that's what I kind of believe, that FIIs will actually start buying into this market post the end of second quarter, which is after September. We could actually see FIIs also beginning to buy in the market and domestic continue to buy. So that is why I'm expecting markets to turn around in October and do very well after that. But until then, I think DIIs will continue to match and more than match the selling by FIIs. However, there's one difference. Sorry, I just want to... the FII selling is always very concentrated in few stocks. So that is why we always feel the fall is very sharp when FIIs are selling, because their selling is very concentrated, in top 2, 3, 4, 5 stocks, and that's why you see the indices, they fall sharply. जी, कार्यक्रम से सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। कार्यक्रम में एक फिर आपका स्वागत है। नजर डाल रहे हैं कुछ और खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि समारोह में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 20 देशों के समूह में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और तीसरे सबसे अधिक ऊर्जा उपयोग करने वाले देश के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले वित्तीय वर्ष में $84 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनका निवेश न केवल उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रहेगा, बल्कि उन्हें सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों का भी लाभ मिलेगा। पुनीत, बहुत संक्षेप में इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे अर्थव्यवस्था के लिए या उद्योग जगत के लिए कितना उपयुक्त माहौल बनाने में मदद मिलती है? दूसरा, क्या ऐसे माहौल के बाद से वाकई में वहां का कायाकल्प होता है या वहां पे औद्योगिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं? बिल्कुल, यदि आप पीछे एविडेंस देखें तो इस प्रकार का जो प्रोग्राम हम देखते हैं ज्यादातर वो गुजरात में या महाराष्ट्र में आज से 15 वर्ष पहले या 16 वर्ष पहले हम काफी बड़े पैमाने पे देखते थे, और उसका नतीजा ये निकला कि वहां पर बहुत फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। यूपी ने अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, देश का सबसे बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, roughly 20% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स इन यूपी, और वो एक अंडर डेवलप्ड स्टेट रहा फॉर मेनी डिकेड्स। और अब उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, जो कई बड़े देशों से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी होगी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का विकास पूरे देश के लिए भी, आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली बीइंग द मोस्ट पॉपुलर स्टेट देश के विकास के लिए और वेलफेयर के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम है। Let's have a look at the currency market before we move on to the Asian market. Just briefly, Puneet, what's your take on the US dollar? Is it becoming stronger or weaker, especially in the light of higher interest rates offered by the central bank there? And generally, in terms of the exchange rate against a basket of currencies and the Indian rupee?
So the US dollar has kind of stabilized at that 102 level, and which is okay with most of the currencies, and it had gone to a high of 104. It is now stabilized at 102. And there is only one event worldwide that we are all worried about and we are watching very closely, is a potential devaluation of the yuan. Chinese economy is in a very bad shape. It's not growing rapidly. It's suffering a lot of setbacks. So there is a possibility that China may go in for a devaluation of the yuan. If that happens, then of course all bets are off, and we could see a dollar index surge. But if yuan does not depreciate and government does not intervene there, I think dollar should stabilize at about 102, which means stable currency exchange rates for the rupee also. How important is the US dollar when it comes to procuring gold in the international market on an ounce basis? So gold prices actually worldwide are determined as an inverse to the dollar index. If dollar index is going up, you will see that gold prices will go down, because they're both seen as safe haven investments as an alternative to each other. So if dollar index has now gone up from 104 and stabilized at 102, we have seen gold prices go up a little bit. If dollar stays in this range, I think gold will also stabilize around this level. But if dollar index falls, which is possibility in next 1 or 2 years, then gold prices could rise. पुनीत, बहुत संक्षेप में ये भी जानना चाहूंगा कि क्योंकि रुपये में अभी डॉलर के मुकाबले काफी दबाव है या अन्य विदेशी मुद्राओं के तौर पे, तो तकरीबन ये जो 78 रुपए के आसपास डॉलर आता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसमें आगे और भी दबाव या और गिरावट की भी संभावनाएं निकलती हैं, खासतौर पे जब अमेरिका में भी अभी मौद्रिक नीति को या ब्याज दरों को लेकर भी कोई बड़ा फैसला आ सकता हो? अमित, आप सही कह रहे हैं, ये काफी मुश्किल है अनुमान लगाना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ट्रेड डेटा आया है अभी, उसमें काफी बड़ा ट्रेड डेफिसिट आया, करीब $24 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और नॉर्मल कोर्स में यदि ऐसा डेटा आता तो हम रुपए में भारी गिरावट देखते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रुपया आज बहुत स्टेबल रहा और ये डेटा कल आया था, तो ये बात साफ है कि मार्केट्स ने ऑलरेडी प्राइस इन किया है कि इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट हमारा होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट शायद 3% हो इस वर्ष because of oil prices. So मुझे लगता है कि रुपए में this level of rupee is already baked in that trade deficit and the difficult condition. Unless, जैसे मैंने पहले कहा कि युआन में कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाए और चाइनीज गवर्नमेंट कुछ करे, मुझे लगता है रुपया इसी लेवल पे स्टेबलाइज होना चाहिए। चलिए नजर डाल लेते हैं एशिया शेयर बाजार पर। एशिया बाजारों में तेजी का माहौल रहा। जापान का निक्केई 1.3%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% और सिंगापुर का स्टेज टाइम्स भी बढ़त के साथ बंद हुआ। चीन और हांगकांग के बाजार में आज अवकाश रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन में जहां 1% तक की गिरावट रही, वहीं फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक लगभग पूर्ण स्तर पर कारोबार करते नजर आए। Puneet, briefly your take on the Chinese economy right now after the COVID restrictions are being relaxed. They're also facing inflation pressures, but somehow it is being kept under some degree of control by the government, and the currency, as you said earlier, is still range bound. So Chinese economy is trying to come out of this COVID-0 losses that they had, and they're trying to push growth, which is very challenging right now for China, and they've actually introduced easy money policy. Across the world, we are seeing tight money policy, but in China, actually, the central bank is pursuing a policy of easy money. They're lowering interest rates, they're increasing money supply. Even then, they don't see a very sharp surge in the economic growth, and that is why this whole estimate that China may go in for devaluation just to push the economic growth. It's still a toss-up. We don't know what's happening there, but I think China is facing very tough economic challenges at present, and we would really be waiting and watching to see how they tackle these challenges. Briefly, what is the outcome of their development moves to improve the situation in the real estate market? So, real estate market is one of the problems in China because that market has completely collapsed. Companies have gone bankrupt, and there is very low employment in Chinese construction sector right now. Government is trying to support this entire sector, but it's not picking up that well right now. It's also a constraint on capital. So clearly, the whole IT sector, the real estate sector, which is of course like India, very very important in terms of employment, these sectors are facing a lot of pressures. And government is trying to support through more money injection into the economy. But I think that engine is sputtering right now.
Moving on to the U.S. stock market, U.S. share markets ended sharply higher yesterday, led by Tesla, Nvidia, and other mega-cap growth stocks in a choppy session ahead of a key jobs report due today. The Dow Jones Industrial Average Index climbed 1.3%, the S&P 500 gained 1.8%, and the Nasdaq Composite Index rose 2.7%. On Money Matters in the afternoon, you spoke about the release of the jobs data, which is expected today. What are your expectations about this particular report, and how do you expect the market to react to it? So, Arjun, this is a very funny situation where bad news on job report may be good news for the market. It's really funny. And if we get a bad number that we show that if employment is falling in America, then it would mean that they would not raise rates beyond a point, and therefore it will be cheered by the market. It's really ironic, but that is the situation right now, unfortunately. So my own sense is that job situation in America continues to be okay. It would definitely have slowed down. We'll see the numbers in a short while from now. But my own sense is that economic growth in America is slowing down. It will, and therefore inflation will also cool. And hence our expectation that the U.S. Fed may go in only for 2 more interest rate hikes, and after that there may be a pause for some time, and they would like to see how the economy goes. So my own sense is jobs number today will also support that thesis that the economy is cooling off a little bit. Moving on to the oil market, Brent crude prices today witnessed modest losses. Crude prices slipped after OPEC Plus decided to increase production targets by slightly more than planned, although tight global supply and rising demand as China eases COVID restrictions limited the decline. In intraday trade, Brent crude was trading at around $117.30 per barrel, while WTI crude prices were at $116.40 per barrel. Very briefly, Puneet, oil, of course, is a commodity that stokes inflation as well, including the U.S., and somehow fracking has gone in the background, especially with its environmental impact. Do you see the U.S. economy actually doing something about the environment, which is why they're facing inflation as far as oil prices are concerned? Arjun, I don't think right now that is an issue, because U.S. is pumping oil at record pace. In fact, they started supplying oil to Europe and certain countries where they were not selling oil earlier. My whole thinking is that OPEC Plus is playing a kind of a cruel joke on the world economy right now. For the short-term gains, they talk about increasing production, but actually they don't do it, and prices keep going up. They're just being greedy right now. But I think in the long term, it will really hurt OPEC's own capability to be a major supplier of oil to the world. Having said that, I think oil prices will stay high at least for the next few months, and only towards next year, maybe beginning of next year, we might see them cool off a little bit. So are we procuring from the U.S. and Russia together? Yes. In fact, India has started procuring oil from USA, which we never did earlier. And from Russia, we had very small imports. Actually, there's so much noise about Indian imports from Russia. The truth is that India imports only a very small fraction of its own requirements. Bulk of oil exports from Russia are still going to Europe. And Europe is the biggest buyer of Russian oil. Yes, India is importing, and we are doing it in a cost-effective manner. तो पुनीत, मोटे तौर पे ये माना जाए कि जो तेल की कीमतें भारतीय बाजार या भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अभी भी कहीं न कहीं वो चिंताएं या दर्द देती रहेंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है अभी कुछ महीने और ये चिंता बनी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 50 रुपए की बढ़त से 51,320 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 545 रुपए की मजबूती से 62,880 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजार में सोना गिरावट से $1,867 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी बढ़त से $22.40 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, बहुत संक्षेप में सोने के दामों में किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है? अमित, मेरा अनुमान है कि सोने के दाम रेंज बाउंड रहेंगे। बहुत ज्यादा तेजी मुझे नहीं लगती, बहुत गिरावट मुझे नहीं लगती, और जब तक ये इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का सीन क्लियर नहीं होता टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, तब तक एक रेंज बाउंड ट्रेड बोर्ड में रह सकता है। चलिए पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Domestic indices witnessed marginal losses. Sensex closes below 55,800 points. Nifty settles below 16,600 level. Rupee depreciates to 77 rupees and 63 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices declined to hover around $117 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
मौज भास्कर